वेलकम अगेन। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। पिछले क्लास तक हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से हम क्या समझ रहे हैं। उसमें हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रखा था। फिर हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी देखा। आज हमें देखना यूटिलिटी का दूसरा अप्रोच जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नाउ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अगेंस्ट आया था। कार्डिनल में क्या बोला जा रहा था? कार्डिनल में हमें बोला जा रहा था कि वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन नंबर। एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन नंबर मतलब आपको कितना यूटिलिटी गेन हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से, उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते थे। बट अगर आप जनरल सेंस में देखेंगे, नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो क्या होता है, आप कभी भी ये नहीं बोल पाते हो। आपने कभी भी आज तक अगर आप देखोगे, इफ यू आर गोइंग टू रिकॉल, आप कभी ऐसे नहीं बोले हो कि मेरे को मैंगो खा के 5 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी गेन हुआ। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हेन आई कंज्यूम मैंगो आई गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन विथ कंजम्पशन ऑफ एप्पल। आप ये बोलते हो कि एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मेरे को मैंगो खाने में होता है, और एप्पल, किसी को एप्पल खाने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है एज कंपेयर टू मैंगो। तो यही हमारा यूटिलिटी अप्रोच में ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है। यह कहता है कि द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। आप क्वांटिटी में इसको नहीं मेजर कर सकते। आप नहीं बोल सकते हो कि 1 यूनिट ऑफ आपको यूटिल मिला या फिर से 28 यूटिल आपको गेन हुआ, ये आप कभी नहीं कहते हो। However, it is possible that consumer to tell subjectively whether the commodity derives more or less or equal satisfaction when compared to another. एक कमोडिटी के कंपैरिजन में दूसरा कमोडिटी उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है या इक्वल दे रहा है या लेस दे रहा है, he can only tell about that thing. And again, that is subjective. Why subjective? Because it will depend consumer to consumer. Say for example, if a man is preferring mango, then any day he will gain more satisfaction with consumption of mango as compared to apple. On the contrary, अगर किसी को apple पसंद है, then in such case what happen? The person will get more satisfaction when he will consume apple instead of mango. So it is a subjective approach. So in ordinal utility, we are dealing that we cannot express the utility in number. That means it is against the cardinal utility approach. और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है हमारा, ये रिफाइनमेंट जब किया गया यूटिलिटी एनालिसिस को और पढ़ा गया तो देखा गया कि नहीं, कार्डिनली तो हम ऐसे नहीं कर सकते। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सप्रेस इट इन, or we can say that we can rank the various commodity as per our satisfaction level. So why it is so? Because utility being a psychological feeling, it is not quantifiable. Satisfaction क्या है? एक फीलिंग है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग। आप इसको क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रादर देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक द कंपैरिजन। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी हाइपोथेसिस, एक कंज्यूमर जो है, ही कैन नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, उसको कितना मिल रहा है किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से, ठीक है। बट वो क्या कर सकता है, ही कैन जज वेदर द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम अ गुड और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इज इक्वल टू, लोअर देन और हायर देन अनदर। मतलब कि वही है, आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको एज कंपेयर टू, जैसे हमने मैंगो एंड एप्पल का केस लेके रखा है, तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है, मैंगो में मिल रहा है कि एप्पल में मिल रहा है। यू कैन डू दैट थिंग। दैट मीन्स इन ऑर्डिनल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रैंकिंग आवर प्रेफरेंस। और ये जो रैंकिंग होता है और इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं ऑर्डिनल के, दैट इज डन थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल 2 गुड्स हैं, एक है बिस्किट और एक है हमारा से फॉर एग्जाम्पल बनाना। These 2 commodity we have, and we have say for example 100 rupees with us,
हमारे पास 100 रुपए है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर क्या करता है, वो 100 रुपए को इस वे से यूज करना चाहता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करे। सो ही विल डू व्हाट, ही विल बाय सम अमाउंट ऑफ बिस्किट। से फॉर एग्जांपल बिस्किट का यूनिट हम x लेते हैं और बनाना का यूनिट y लेते हैं। दैट मीन्स x इज आवर बिस्किट एंड y इज आवर बनाना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ यूनिट ऑफ x खरीदेगा और कुछ यूनिट ऑफ y खरीदेगा, है ना। या तो हो सकता है कि वो, जैसे कि एग्जांपल हम ले ले कि 5 यूनिट्स वो बिस्किट ले रहा है और 2 यूनिट्स बनाना ले रहा है, या तो वो 3 यूनिट्स ऑफ बिस्किट ले रहा है और 4 यूनिट्स ऑफ बनाना ले रहा है। दिस इज y फॉर बनाना। सो वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये गुड्स को खरीद सकता है, बिस्किट्स एंड बनाना को, विद द इनकम ही हैव, यही वो कर सकता है। सो ही विल हैव अ लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। आप भी जब लेने जाओगे तो आप भी क्या करते हो, आप देखते हो कि ठीक है मैं कुछ यूनिट्स इसका ले सकता हूं, कुछ यूनिट्स उसका लिख सकता हूं, और वो जब आप लिस्ट करोगे, बनाओगे कि कितना यूनिट्स किसका लिख सकता हूं, तो आपके साथ पास बहुत सारा यूनिट्स होगा। तो वो जो लिस्ट है, से फॉर एग्जांपल यहां पे और हो गया हमारा ये 3 है, इन लिस्ट में वो कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है, जैसे कि जितना सेटिस्फैक्शन वो इतना इस कॉम्बिनेशन पे गेन कर सकता है, 5 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स और 2 यूनिट्स ऑफ बनाना पे, उतना ही वो से फॉर एग्जांपल इस पे कर रहा है, दैट इज n यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स एंड n यूनिट्स ऑफ बनाना। तो इन दोनों पे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। दैट मीन्स या तो वो इसको ले ले या इसको ले ले, उसके लिए बात एक ही है, क्योंकि वो दोनों में उतना ही सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है। दैट मीन्स ही इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट वेरिएबल, ये वैरी नहीं कर पाएगा। इधर ही टेक्स दिस कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन, ही इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस फॉर व्हाट, indifference because his satisfaction is remaining the same if he chooses this combination or this combination। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लिस्ट हो सकते हैं। तो उसी को जब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारा इंडिफरेंस कर्व बन के आता है। जैसे कि हम देखते हैं, देखिए यहां पे हमारे पास 2 कमोडिटी है, ठीक है, इस कमोडिटी में हमारे पास एक बिस्किट है और एक बनाना है। तो ये हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये गुड x है, ये गुड y है। कॉम्बिनेशन A मतलब पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 1 यूनिट ऑफ बिस्किट एंड 12 यूनिट्स ऑफ बनाना। B में क्या होगा, 2 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ बनाना। D में क्या होगा, 4 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ बनाना। E में हमारा 5 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनाना। तो ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखो हमारा ये ग्राफ बन के आता है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। यहां पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है 1 यूनिट्स ऑफ बिस्किट एंड 12 यूनिट्स ऑफ बनाना। ये हमें दिखाता है 2 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ बनाना। ये हमें दिखाता है 3 यूनिट्स ऑफ बिस्किट, 5 यूनिट्स ऑफ बनाना। वैसे ही हमारा ये जो है ये दिखाता है 5 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनाना। So these are the various combinations that the consumer have of biscuits and banana जो वो खरीद सकता है। और क्या चीज है, देखो इन सारे combinations में उसका जो satisfaction है वो equal है। मतलब आप इसमें से कोई भी combination उसको दे दो, जितना satisfaction वो A combination में gain करेगा उतना ही वो D में करेगा, जितना वो B में करेगा उतना ही E में करेगा। सो दैट मीन्स ये जो कर्व हमारा इंडिफरेंस कर्व आ रहा है यहां पे, जैसे कि मैं इसको अलग से बना के आपको दिखाता हूं, ये जो कर्व बना है हमारा इंडिफरेंस कर्व का, यहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास, यहां ए होगा, बी होगा, सी होगा इन दिस कर्व। सो जो भी कॉम्बिनेशन इस कर्व पे हमारा रहेगा वो कॉम्बिनेशन क्या करता है, दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, satisfaction to the consumer। ठीक है, so what consumer will do, he will prefer those goods that are in this along this line।
इस कर्व पे जो जो कॉम्बिनेशन रहेगा वही वो उसको प्रेफर करता है. दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व. दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट ऑल द पॉइंट्स दैट इज ए बी सी डी एंड ई. हियर सी द एग्जांपल. यहां पे ए से लेके जो ई का पॉइंट है, व्हाट दे आर लाइंग ऑन द इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व पे लाई करता है. दैट मीन्स they provide what? Equal satisfaction. That is they provide the same level of satisfaction to the consumer. So indifference curve का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व में हमारा क्या होता है? इन इंडिफरेंस कर्व इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी एंड ई, which gives the consumer same level of satisfaction. जो भी कॉम्बिनेशन इस ग्राफ के पॉइंट पे रहेगा वो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा. दिस इज इंडिफरेंस कर्व. नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी शुड नोटिस इज दैट, सी हियर, ए कॉम्बिनेशन में क्या था हमारा? इन ए कॉम्बिनेशन वी हैड 1 units of biscuits, 12 units of banana. Okay. Similarly, in B, what we had? We had 2 units of biscuits and 8 units of banana. In D, what we have? We have 4 units of biscuits and 3 units of banana. तो यहां पे देखो, जो पहला कॉम्बिनेशन है 1 बिस्किट्स का और 12 बनाना का, ठीक है. फिर दूसरा में क्या हो रहा है? हम 1 यूनिट ऑफ बिस्किट्स बढ़ा रहे हैं, 2 कर रहे हैं. तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? हमें बनाना का क्वांटिटी कम करना पड़ा है. देन ओनली वी हैड इंक्रीज द बिस्किट्स वाला कमोडिटी. दैट मीन्स व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स 1 more biscuits, what he have to do? He has to forego some units of banana. Then only his total utility will remain same. है ना? बिकॉज यहां पे अगर हम ये चीज बोल रहे हैं कि अगर किसी एक कमोडिटी को उसको कंजम्पशन बढ़ाना होगा तो दूसरे को उसको घटाना पड़ेगा, देन ओनली दी टोटल यूटिलिटी दैट ही विल डिराइव और द सेटिस्फैक्शन दैट ही विल गेट will remain the same. Because this combination that we have in this graph A, B, C, D and E, they provide the same satisfaction to the consumer, and this will be only possible if we increase the commodity or quantity of biscuits, then we have to forego some quantity of banana. कुछ तो बनाना कम करना पड़ेगा, तभी वो बिस्किट्स को लेके अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम कर रख सकता है. Okay, and this indifference curve is what? This is downward sloping. Okay, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है ये किसके लिए होता है? ये जो होता है हमारा, दिस इज बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Marginal rate of substitution. So by marginal rate of substitution, what we can say? We can say that a consumer have to forego, उसको कुछ units of banana छोड़ना पड़ेगा. He has to forego some units of banana if he wants to increase some units of biscuit. और ये कितना छोड़ना पड़ेगा एक बिस्किट को, सॉरी एक बनाना के कमोडिटी कंपोनेंट में हमें कितना फोरगो कर देना पड़ेगा जिससे कि हम बिस्किट्स के क्वांटिटी को बढ़ा सके, वही हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं. दैट मीन्स इट इज व्हाट? इट इज सिंपली अ रेट at which what we will do? At which we will substitute, at which we will substitute some units of bananas for biscuit. बिस्किट के कंजम्पशन को बढ़ाकर हमें कितना यूनिट ऑफ बनाना छोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा टोटल यूटिलिटी सेम रहे, यही मार्जिनल यूटिलिटी बताता है. दैट मीन्स सो दैट
what will happen so that the total utility remains unchanged or constant. यही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है. दैट मीन्स मैथमेटिकली अगर हम देखें एमआरएस तो क्या होगा, चेंज इन y commodity as compared to change in x commodity. Okay, this is our marginal rate of substitution. Okay, now let us take a schedule to understand the law of diminishing marginal rate of substitution. Now see in this table, first column is of combination, second one is of quantity of banana. We have taken is as X commodity, and in commodity Y we have taken quantity of mangoes, and thereafter we will find marginal rate of substitution. Now say for example, suppose we have a one combination A where we are going to buy 1 units of banana, that is quantity X, and 15 units of mangoes. Similarly in combination B we are going to have 2 units of banana and 12 units of mangoes. In C we will take 3 units of banana and 10 units of mango, and in D we will take 4 units of banana and 9 units of mangoes. Now see all these combinations, that is A, B, C, D, these are the combinations at which our consumer is indifferent. That means these all 4 combinations A, B, C and D, they provide equal level of satisfaction to the consumer. So we know that MRS is what? The rate of change. That means if we are going to increase the quantity of Y commodity, then this cannot be done until and unless we decrease the quantity of X. And why we will do that thing? So that the level of satisfaction doesn't changes. Similarly, we can see that in comparison with A, in B combination, we have increased one quantity of banana and our banana has become 2 quantities. And similarly, due to such increase, we have to do what? We have to decrease the quantity of mangoes that we will buy or we will keep in our bundle. That means from 15 it has come to 12. Therefore, at A combination and B combination, the consumer will have the equal level of satisfaction. Okay, now see, MRS as we have discussed is change in Y as compared to change in X. So in the first, for A, what is our MRS? It is change in Y. Change in Y, that means mango. How much it has changed? Nothing. It is our first and foremost, so no marginal rate of substitution. But we can compute the MRS in B. Okay. So in comparison with A, in B, what will be our marginal rate of substitution? So we are going to see what is the change in our commodity X and what is the change in our commodity Y. So in commodity Y, what it has changed? It has changed from 15 to 12. This was the change. This is delta, and delta change, delta means change. Okay. So, and in commodity X, what has happened? It is how much now? It is 2, and previously it was 1. That means 3 by 1, or you can say the rate is 3:1. That means for having 1 extra units of commodity X, you have to decrease 3 quantity of commodity Y, then only you will have the same satisfaction as compared to commodity or combination A. So similarly for C, what is our MRS? Now see, in C what has happened? From 12 it has become 10, and from this is the change. That means the change is how much? 2:1. Similarly, we can find for D from 10, 9. That means 1, and from 3 to 4, that means 1. This is the MRS. Okay.
This is marginal rate of substitution. Now, if we analyze this table for different combination, that is A, B, C and D, we can see that the rate of change is decreasing. यहाँ जो change हो रहा है हमारा, मतलब हम जो quantity of banana extra consume कर रहे हैं, उसके लिए हमें कितना quantity of mango को forgo कर देना पड़ रहा है, वो gradually change हो रहा है. देखो यहाँ पे हमेशा हमने एक एक unit of banana बढ़ाया है ना? There is only increase of one. But if we see for the combination B, एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमें कितना यूनिट कम करना पड़ा था मैंगो का? 3 यूनिट. लेकिन फिर देखो कॉम्बिनेशन सी में अगर हम आते हैं, यहां भी हम एक यूनिट ऑफ बनाना बढ़ा रहे हैं, बट फॉर दैट वी हैव टू ओनली फॉरगो 2 यूनिट्स ऑफ मैंगो. सी द रेट हैज बीन डिक्रीज्ड. यहां पे 3 हमको फॉरगो करना पड़ता था एक बनाना लेने के लिए, लेकिन यहां पे हम सिर्फ 2 को फॉरगो कर रहे हैं. सिमिलरली इफ वी सी द कॉम्बिनेशन डी, हियर व्हाट इज हैपनिंग? फॉर इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ बनाना वी हैव टू फॉरगो ओनली 1 यूनिट ऑफ mango. And why this is happening? This is happening because of law of diminishing marginal utility. Sorry, law of diminishing marginal rate of substitution. Law of diminishing marginal rate of substitution. And by law of diminishing marginal rate of substitution, what we mean? We mean to say that the tendency for the MRS to fall with the increase in the quantity of banana is known as law of diminishing marginal utility. And why it is happening? See, if we are consuming more of banana, then there will be a certain stage where the marginal utility that we will derive from consuming that extra banana will goes on decreasing. Therefore, we don't have to forego much amount of banana for increasing much amount of mangoes. This is law of diminishing marginal rate of substitution. Okay. And there is one exception to this law. That means this law will not hold in case of goods that are perfect substitute to each other. This law doesn't hold in perfect substitutes. And in such case, our MRS is always 1:1. Now we can see this with example also, how that in case of perfect substitutes this law doesn't hold. Say for example, here we take the combination, okay, and here we will take some goods like A, B, C and D. We have 4 combination. Let's take example that we have here 5 rupee coin, rupee 5 coin and rupee 5 note, and here we will calculate the MRS. These 2 you have. Okay, now if you go to a market, if you give them 5 rupee coin or 5 rupee note, the result will be the same. That is, the value is same for the coin and the note. So the number of product or the amount of product that you can buy with 5 rupee coin is always equals to 5 rupee note. If you have 2 options with you, either to take the coin or to take the note, or you can have the combination. You take some notes, you take some coins. So say for example, if you have 1 5 rupee coin and you have 8 5 rupee note. In other case you have 2 coins and 7 note. In other case you have 3 coins, 6 notes. In other case you have 4 coins and 5 notes. Here see the marginal rate of substitution is, if you are here it will be to nil, but in case of B, the second combination, if you increase 1 extra coin in your pocket, okay, you are increasing 1 extra coin, so what you will do? You will decrease 1 extra note from your pocket.
the value will be same with you, है ना? अगर आप एक एक्स्ट्रा कॉइन 5 रुपए अपने पॉकेट में रख रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम ना हो, कंसिडर इज दैट लाइक यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी विथ यू. ओके, नाउ you have 9 5s are 45 rupees with you, and you have these different combinations with you to take. Either you take 1 5 rupee coin or 8 5 rupee note, or 2 5 rupee coin or 7 5 rupee note. Okay, here what is happening in every cases A, B, C and D, whatever the combination you take, you are ultimately going to get rupee 45. That is the satisfaction. Consider it as a satisfaction level. Okay, so you are going to have rupees 45 with you in any combination you are going to select. So if you want to increase one coin with you, what you will do? You have to decrease 1 rupee 5 note with you, है ना? Similar, see in the case of combination B, from one coin you are going to have now 2 coins. So from 8 notes you will have to keep only 7 notes with you, so that your satisfaction level is 45 only. Similarly in C, what is happening? From 2 you are going to 3, that means 1 is to 1. You have to decrease from 7 you have to come to 6. Similarly here 1 is to 1. So here what is happening here? Marginal rate of substitution in each case is 1 is to 1. Irrespective whether you are increasing one product, or you can say one combination, either of the one combination, that is rupee 5 coin you are increasing, so you have to decrease 1 8 rupee note. But in case of commodities that are not perfect substitute, this banana and mangoes are not substitute to each other. Okay, if you have the urge to have banana, it cannot be satisfied by taking mangoes, है ना? बनाना खाने का मन है तो मैंगो लेके कोई मतलब नहीं, और मैंगो खाने का मन है तो बनाना खा के कोई मतलब नहीं होगा आपको. You are not going to get that satisfaction. But in case of coin and note, either you take the coin or the note, you are going to get the same value with you. That means they are perfect substitute to each other. Therefore, in case of perfect substitute goods, this law of diminishing marginal rate of substitution doesn't hold. Here, see, the rate that is, it is always same. It is always 1 is to 1. It doesn't decreases. So this is law of diminishing marginal rate of substitution. Now see, we have discussed indifference curve, and there we have seen what? We have seen that our marginal rate of substitution in indifference curve, and we have also seen that what is indifference curve? It shows the different combinations of two commodities that gives the consumer same level of satisfaction. Now this indifference curve analysis have some assumption with it. The first one is non-satiety. Now by non-satiety what we mean? We mean that the customer is still now not fully satisfied with the product. अगर आप मैंगो खा के satisfy हो गए हो, तो उसके बाद तो आप कोई भी एक extra unit of mango नहीं बढ़ाना चाहोगे ना. You will have only the banana only. So these indifference curve analysis that we have studied, it assumes that the customer is still now not fully satisfied. Okay. Now the second assumption is preference or indifference of a consumer are transitive. Now for this, let's take this example for second one. Suppose there are 3 goods, A, B and C, and if Ram prefers A to B and B to C, मतलब राम को ए प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगता है बी के कंपेयर में, एंड बी ज्यादा अच्छा लगता है ए के कंपेयर में, देन दिस विल होल्ड ट्रू फॉर ए टू सी ऑल्सो. देन ही विल प्रीफर ऑलवेज ए इन कंपैरिजन ऑफ सी. दिस इज प्रेफरेंस और इंडिफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर आर ट्रांजिटिव. Okay, this is the second assumptions that we have. And the third one is diminishing marginal rate of substitution. What is this? As we have discussed in the previous one, that the rate of substitution means the rate at which you will substitute one commodity in compared with other commodity will decrease, will diminishes gradually. जो बनाना हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे थे उसके लिए हमको जितना मैंगो फोरगो करना पड़ रहा था वो रेट क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा जैसे ही हम बनाना का एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम करते जाएंगे. सो दिस इज द थर्ड अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. Now see, the next topic that we are going to discuss is monotonic preference. By monotonic preference, we want to say that any consumer prefers the bundle which has more of at least
one of the goods and no less of the other goods as compared to the other bundle. Like we can take the example, suppose you have 3 bundles with you. By 3 bundles, I mean to say that A, B and C, that means these 3 combination of 2 goods you have. Okay. Say for example, for X, you can have 5 units and for Y, you can have 10 units. Similarly, for X, you can have 6 and for Y, you can have 10. Similarly, for C, you can have X 7 and Y as 10. Here what we are seeing that in every bundle, that is A, B and C, units of X is more and units of Y is no less than other. So in any day, a consumer is going to prefer such kind of bundles. In comparison with A to B, he will prefer A. In comparison with B to C, he will prefer B. Why? Because here A has more of X commodity and no less of Y commodity. Similarly, in B, you can see in B, sorry, here it will be, I have made some mistake, pardon me. If we compare A and B, what you can see? You can see that in B, we have more of X and no less of Y. Okay? So in this case, what he will do? He will prefer B is preferred. He will always prefer B. Similarly, if we compare C and B, see here, we have more of commodity X as compared to Y and no less of commodity Y as compared to B bundle. So in this case, he will prefer C. So such kind of preference of consumer are known as monotonic preferences. Okay, we have the definition of monotonic preference. Like see here in the definition what it says that a consumer's preference are monotonic if and only if between any 2 bundles, like we have bundle A, B and C. Okay, here what we had 5 units of X and 10 units of Y. In this we had 6 units of X and 10 units of Y. Here we had 7 units of X and 10 units of Y. So between any 2 bundles, you take any 2, either A, B, A, C, B, C, any 2 bundles, the consumer is going to prefer the bundle which has more of at least one of the goods. In this example, we have taken X. Like if we are going to compare A with C, so in these 2 bundles, the consumer will prefer which bundle? In which, if any of the 2 commodities, there is at least one more in the 1 commodities. That is in X, see, from 5, in A we have 5 units of X, but in C we have 7 units of X. Okay, so he will prefer X for this, but you have to also see that no less of the other goods. There is no less in Y. That means if we compare A and C, here more is one commodity, more of one commodity and no less of other. So he is going to prefer this bundle out of the bundles he have. But if in C we had like X is 7 but Y is 9. Here what is happening? Here see, as compared to A, we have more of X but there is less of Y. The other good has become less. So such kind of preference are not monotonic preference. In this case, we can't say which preference will be monotonic preference. For monotonic preference, this will only hold when we have a bundle in which there is at least one extra of one commodity but no less of the other commodity. So such kind of preferences are known as monotonic preferences. Now the next topic that we are going to discuss is indifference map. Now we have seen that what is indifference curve. It is like this. Here we have commodity X, here we have commodity Y. Okay, and what we had a curve like this, and here we have different combinations A, B, C, D. And what were these combinations? These combinations were such as that they were yielding same level of satisfaction to the consumer. Suppose this is one of that.
Okay, now the consumer may have other combinations also, like we can name them as X, Y, Z. He can have one more set of combinations. Let's say this is P, Q, R. Okay, so he can have different set of combinations. The satisfaction level in this IC curve 1, this is IC curve 2, and this is IC curve 3. Okay, the satisfaction level in IC curve 1 and all the combination that we have on this curve, that is A, B, C and D, here the satisfaction level is same. That means A is equals to B is equals to C is equals to D. This is one set of satisfaction that the consumer is getting. Similarly, he may have other set which are yielding him different level of satisfaction, but such satisfaction is what, like X, Y and Z. These three are yielding another level of satisfaction. These four are yielding some other level of satisfaction. But if we compare between them, the satisfaction that he is getting from X is equals to Y is equals to this. But the satisfaction between A and X is not same. We can have such bundles, na? Similarly, we have P, Q, R. So when we plot such different IC curves in a single graph, जब हम एक ही ग्राफ पे डिफरेंट आईसी कर्व को दिखाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाता है. सो द डेफिनेशन of indifference map is what you can see in your book or in every textbook. It is written like it is a family of indifference curve. Okay, this is the family of indifference curve. If we plot different indifference curve in a single graph, then we are going to get indifference map. Remember one thing, the satisfaction level on IC curve as compared to IC, if we compare these two curves, IC1 and IC2, the satisfaction level is always higher in IC2. As we move rightwards, हमारा कर्व जितना rightward move करेगा, level of satisfaction उतना बढ़ता जाएगा. Similarly, if we compare IC2 with IC3, the satisfaction level will be more in IC3. And similarly, if we compare IC1 with IC3, the satisfaction level will be more in IC3. Why? Because it is towards the right. See ना, because if we compare IC1, हमको बस इतना ही amount of commodity Y मिल रहा है और इतना amount of commodity X मिल रहा है. But if we compare this one, what is we are going to get? See, there is extra amount of commodity Y and extra amount of commodity X. So it is very much obvious now, you will get the more satisfaction if we compare this IC1 and IC2. So as we move towards rightward in the graph of our indifference map, the curve which is more rightward, that will yield more satisfaction, or you can say higher the curve that one is higher. Yes, सबसे higher कौन सा है हमारा IC3 है. This will yield the more satisfaction as compared to the other two graphs that we have, that is other two curves that we have, that is IC1 and IC2. Now next that we are going to deal with is our next concept is features of indifference curve. Now features of indifference curve, we have different features of our indifference. First feature is indifference curve slopes downward. See the shape, it is sloping downwards and it is going towards right. This is the first feature. And why this is happening? See, it is because of that the marginal rate of substitution that we had. Why? Because if we are going to consume more of one commodity, then we have to forego some other commodity also. Like, say, take this example. Here it was 5 units of Y. At this point, this was A combination, okay? And we were having 2 units of B. Sorry. At combination A, we had 2 units of commodity X and 5 units of commodity Y.
Suppose the next combination that we have is B here. So in this case, what we have? Here we have 3 units of Y and 3 units of X. So we can see in combination A, we have 2 units of X and 5 units of Y. And in other combination B, if we have increased 1 units of X, from 2 we have done 3, then what we had to do? We had to decrease some units of Y. From 5 it has become 3. That's why whatever combination you go, you will have a shape that is sloping downwards towards right. And it is because to have more of, if we take our example, to have more of commodity X, the customer has to forego some commodity Y. That's why our IC curve always slopes downwards towards the right. That means from left to right it is sloping. Now the next feature of our indifference curve is that higher indifference curve gives greater level of utility or satisfaction, you can say. That means higher IC curve gives greater satisfaction. We have discussed just before कि जैसे ही हम IC2 में जाते हैं तो IC1 के कंपेयर में क्या होगा, यहां पे सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा, फिर IC3 में IC1 या IC2 से ज्यादा होगा. सो एज वी मूव टुवर्ड्स राइट और एज वी गो हायर, जो कर्व जिसके ऊपर जितना होगा दैट विल गिव द ग्रेटर satisfaction. This is the second features that we have in our indifference curve. Now the next one is two indifference curve never intersect each other. Now see, if they are intersecting each other at any point, say for example, this is one IC curve, that is IC3. So in IC curve, we have seen that if there are different IC curve, there will be different level of satisfaction. If this one is, say for example, it is IC4. Okay. So if we take this IC4 and compare with IC2, so we till now we have read that different IC curves will give different level of satisfaction. Along these IC curve, you may have different level of combinations. ये A, B, C जो हम करते हैं, ये combination है एक IC curve में. But ये IC curve में जो भी होंगे हमारे, वो equal level of satisfaction देगा. लेकिन जब हम दूसरे IC curve में जाएंगे, तो यहाँ भी बहुत सारे combinations होते हैं हमारे. But these combination will giving the equal level of satisfaction among themselves. But if we compare these two IC curve, तो दोनों आईसी कर्व में जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो डिफरेंस होगा. सी इन द सेकंड फीचर आल्सो वी हैव सीन हायर आईसी कर्व्स गिव ग्रेटर सेटिस्फैक्शन. सो अगर दो आईसी कर्व इंटरसेक्ट कर जा रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है. अगर ऐसा होगा तो आईसी कर्व तो होल्ड ही नहीं करेगा हमारा, है ना. वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, so they are not going to give you the same level of satisfaction. That's why this one is the third, that is IC curve never intersect each other. So we have completed ordinal utility analysis. In ordinal we have said seen that it is on contrary to the cardinal utility analysis. Cardinal में क्या होता था, वहां पे बोला जाता था कि आप जो है यूटिलिटी को इन नंबर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा तो आप कभी होते हम नहीं देखते हैं. In real sense, this doesn't hold true. What we can do instead we can rank the combinations, or we can say that, okay, combination A is giving me more satisfaction than combination Y. So we can rank the different commodities as per the satisfaction, but we can't give them absolute number कि कितना satisfaction उससे मिल रहा है. और यही हम ऑर्डिनल में देखे थे. तो ऑर्डिनल में हमने क्या देखा, यहां पे सबसे पहले देखो कार्डिनल में था हमारा. कार्डिनल में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड ऑर्डिनल में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आईसी कर्व एंड indifference map. So this is how you should study the consumer behavior if you are going to read the utility analysis. First, group them between two categories, cardinal and ordinal. In cardinal you have to study diminishing marginal utility, and in ordinal you have to study law of diminishing marginal rate of substitution and IC curve. So thank you everyone. अगर आपको कुछ डाउट होता है then you can ask me in the comment box.
And if you want to have some videos on other topics, then do make a point in the comment. I will prepare the video for the same. Thank you.